Hello everyone. First of all, I would like to thanks all for your beautiful and wonderful comments, and I'm really thankful to God that my suggestions and my last minute revision notes are helping all your working professionals. So to help you with your preparation, again I am back with MCO 07 financial management, one of the very tricky chapter. And friends, let me tell you that I have got as many as 28 videos on MCO 07, which you can check it out in my playlist on my channel. So let's see a few important suggestions, and apart from that you can also prepare from other study materials that you have, right? So the first question is, what are the objectives and nature of financial management, and briefly describe the role of a financial manager. Now the question is, like, first, when you will try to write down the answer, always try to define the main topic on which the question is asked, like financial management. So basically financial management, it is it's a very simple process, in fact a very complex process for the financial accountant. And it is the financial management refers to the management of funds, the inflow and outflow of funds. एंड इसको थोड़ा सा और अगर ब्रॉड में हम लोग डिफाइन करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, तो एज यू नो, लाइक जहाँ पे मैनेजमेंट आती है वहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये इसमें प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग ये चीज़ों के आंसर्स ढूंढते हैं, दैट इज़ हाउ टू प्रोक्योर फंड्स एंड वेयर टू प्रोक्योर द फंड्स, हाउ टू रेज फंड्स, दैट इज़, एंड वेयर टू इन्वेस्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, and how to manage and control the funds while working with working capital. And let's see the main natures of financial management. यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये जो स्टडी मटेरियल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये शॉर्ट में है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत ही बड़ा लेंथ हो जाएगा वीडियो का. तो अगर स्टडी मटेरियल अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप और बाई ईमेल आईडी विच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेचर जब बात करते हैं, नेचर या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या स्कोप के बारे में, तो ये मेन चीज़ तीन डिसीशंस होते हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं. फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीशंस, सेकेंडली फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्डली डिविडेंड डिसीजंस. अगर कंपनी बहुत बड़ी जो कंपनी है वहाँ पे डिविडेंड इज़ अ बिग इशू कि वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स और नॉट. जैसे फाइनेंशियल इन डिसीजंस, आई मीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में you can write about how to manage the working capital, then how and where from you will buy the fixed assets like machinery, land and all that. Then capital budgeting decisions, then analysis of the securities, shares, bonds, etc., and managing all the investments, mergers, or joint ventures and strategic alliances. In financing decisions, again, the manager has to identify the different sources of finance where he can get easy finance at reasonable rate of interest, then cost of raising finance, then analysis of interest rates, taxes and depreciation. बेसिकली ये सारा जो नेचर होता है ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेके है, प्योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं होते, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. एंड लास्टली डिविडेंड, हाउ मच डिविडेंड शुड बी पेड टू द शेयर होल्डर्स, राइट. एंड नाउ देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बहुत ही सिंपल है. मेन ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, राइट. हर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है. एंड जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, देन ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द sources of finance at minimum cost, and lastly मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे. एंड दीज आर ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट्स. ओके, नाउ देख लेते हैं क्विकली
द रोल ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर, इसके मेन रोल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, टू एस्टिमेट द फंड्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी and how to allocate the funds into different activities to take investment, financing and dividend decisions. ये तीन चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया. Then allocation of funds, then evaluation of rate of return on capital, and बाकी के जो financial negotiations हैं with banks and financial institutions to have good relationship with the stock exchanges and to maximize the profit and wealth and assets of a business organization. कुछ और आप हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने कुछ 30 क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग एंड शॉर्ट को मिला के, ठीक है. तो इस वीडियो में देखते हैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस होते हैं कवर करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अलोंग विथ द न्यूमेरिकल्स. द नेक्स्ट इज अ शॉर्ट नोट ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक्चुअली यहाँ पे इसका डेफिनेशन सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है. बेसिकली इट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट वेयर मनी इन द प्रेजेंट वर्थ इज़ मोर दैन द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन द फ्यूचर. सो यहाँ से अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, राइट. ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, if you are depositing 1000 rupees in a bank which gives you 10% rate of return, so after a year you will be having 1100, right? So this is equal to the principal amount of 1000 plus 100. So now time value of money, that means with the lapse of time, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जो मनी की जो वैल्यू है that increases, right? So to find out the value of this, if we have interest rates, so we can use this value. FV stands for future value of money, PV stands for present value of money, and you will multiply the present value with 1 plus I to the power of n. N is the number of years for which you are investing and I is the rate of return, right? So in this way we can find the future value of money. So that is called time value of money. The next question which you can get in in short notes, that is basic valuation model of valuation of securities. Now according to this model, an asset derives its value from the cash flow associated with it. The value of an asset is equal to the present value of its expected cash flow. So that is clear from this. And to find the value of an asset, so we use this formula, that is CF1, CF2, CF3. This all stands for cash flow in the subsequent years, which is divided by 1 plus I to the power of 1 और n. वही सेम फॉर्मूला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. यहाँ पे आपको n की वैल्यू 1 लेनी है, फॉर सेकेंड ईयर 2, फॉर थर्ड ईयर 3 एंड लाइक दैट, ठीक है. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. And this is again a short question, distinction between systematic risk and unsystematic risk. बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में स्ट्राइक किया है. Systematic risk basically it arises due to external factors and unsystematic risk arises due to internal factors. And external factors include change in the economic conditions of a country, then change in the political conditions or social conditions. Whereas internal factors include labor problem, breakdown in the machinery, so like that. तो ये actually unsystematic risk जो है that is somehow controllable, but systematic risk is uncontrollable. The next is again a short question on arbitrage pricing theory. Now this model was developed by Stephen Ross. And basically arbitrage is a process of earning profit by taking advantage of different pricing of an asset. And basically from this third point, this theory will be clear. Like securities should be sold at a higher price and simultaneously we should purchase security at a lower price. So the difference between these two purchases and sale is what is called the arbitrage or arbitrage pricing theory, and this is how we earn, right? So basically this is relates to for stock market, and these are the basic assumptions of this arbitrage pricing theory, that investors have homogeneous expectations
they are rational, and they are risk takers. They want to maximize the return on investment, and there is a perfect competition in the market, and there are no transaction costs. So do write these assumptions along with the theory if you get a question. Okay, आगे बढ़ते हैं. What is cost of capital, how it is calculated, and describe the different types of cost of capital. Now थोड़ा सा ये जो वर्ड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज़ नॉट द सेम एज द वर्ड इम्प्लाइज. बेसिकली कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और in other words we can say it is the minimum rate of return the firm must earn from the investment so that the market value of equity share doesn't fall. इसकी जो हर कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है, तो it should raise funds from such sources in such a way that the raising of capital should be reasonable along with no changes in its market value. Now some of the characteristics of cost of capital is written here, like it is a rate of return and not a cost or expense as such, and return is calculated on the basis of actual cost of different components of capital, and basically it refers to the minimum rate of return on investments, and relates to long term capital funds or investments, and it has three main components, that is zero risk level, business risk level, and financial risk level. All these risks exist in the market. So before cost of capital is calculated, a company always consider these three risks. Now let's see the importance of cost of capital. It helps to evaluate new investment proposals or appraisals, and it helps to determine the optimal capital structure of a company, and it also helps to formulate appropriate dividend policy of a company, like how much dividend to be paid, then working capital policy, and to evaluate the financial decision of the management. So इसकी unlimited importance है cost of capital की, and these are the different types of cost of capital that a company calculates, like explicit cost of capital and implicit. Then we have specific cost of capital and combined cost of capital. Thirdly, average cost and marginal cost, and future cost and historical cost. So these different types of cost depends on the nature and size of the company, and accordingly they calculate the cost of capital. Let's move on to the next question. What is capital budgeting, and what are the process involved in it, and describe the different types of capital budgeting decisions. So as the name implies, it is a process of making capital investment decisions, and capital investment expenditures, all these include buying of fixed assets like machinery, equipments, land and building and all that, and these expenses are generally of very large amount and long term investment decisions. And basically these are the different processes of capital budgeting. The first one is first, like, we have to consider an idea कि how much capital has to be allotted for, or for this buying fixed assets. Then what are the future cash flows associated with these investments, then evaluating all the cash flows, then selecting a good project which can give maximum return, and execution of the project. So you have to define all these processes one by one. Okay, basically long questions में ये strike कर सकता है, and these are the different types of capital budgeting decisions or project investments which are undertaken by a company. So basically a company starts with a new project. एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकती है, उसके बारे में इवेलुएट कर सकती है कि रिटर्न क्या है, कैश फ्लोज क्या है, एंड इट कैन ऑल्सो एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको एक्सपैंड कर सकती है, रिनोवेट कर सकती है. देन रिन्यूअल ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज सिंपल. ए कंपनी कैन ऑल्सो think of capital budgeting in case of research and development projects, and lastly exploration projects. So basically exploration तो more or less government companies जो हैं, बड़ी बड़ी companies हैं, mining manufacturing companies, so they undertake all this. Okay, आगे चलते हैं. Next question, what are the various methods of capital budgeting decisions? तो basically यहाँ पे ये जो तीन methods हैं, that is payback period, ARR, that is accounting rate of return, and discounted payback.
ये तीनों जो मेथड हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के, ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट नोट्स में मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए। एंड पे बैक बेसिकली, या अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं इसके ऊपर, तो वो भी वर्कआउट करने पड़ेंगे आपको इसके ऊपर। तो पे बैक पीरियड होता है, इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लोज और एक्सपेंडिचर। एंड एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इफ़ ए कंपनी स्पेंड्स 50,000 ऑन एनी प्रोजेक्ट एंड एक्सपेक्ट्स दैट विद इन 2 years इट विल गेट बैक द अमाउंट, देन द पे बैक पीरियड इज़ 2 years। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम लोग कितने साल के बाद में उसको वी विल बी गेटिंग द रिटर्न्स। सो अगेन इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग डिसीजन का। इसके बाद में है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर डिफरेंट ईयर्स फॉर द होल लाइफ ऑफ एन एसेट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों का रेशियो से हमें मालूम चल जाएगा कि इसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ओके, ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग ईबीटी एंड ईबीआईटी या पैट को लेके कैलकुलेशन करते हैं। ये न्यूमेरिकल में भी आपको मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक में इन दिस मेथड द डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। इन अदर वर्ड्स, the number of periods taken to recover the initial investment is calculated on the basis of present value of the future cash flows। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी बेसिक वैल्यूएशन मॉडल में, एनपीवी को लेके यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने हैं टू एनालाइज ए प्रोजेक्ट और बजट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अगेन यहाँ पे भी आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये तीन मेथड हैं जो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हैं, अप्रेस करते हैं वेदर द कंपनी शुड टेक द इन्वेस्टमेंट और नॉट। ठीक है, तो अगेन नेट वैल्यू, इसके बारे में एनपीवी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा है। इसके ऊपर सम्स भी आपको मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको शॉर्ट नोट में भी मिल सकता है एनपीवी के ऊपर लिखने के लिए, राइट। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीआई मेथड। एंड बेसिकली यहाँ पे ये रेशियो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये दोनों के बीच का रेशियो है। तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप इनको भी अगर दिमाग में रखते हैं तो यू कैन ईजिली डिफाइंड एंड राइट मोर अबाउट दिस, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आईआरआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। एंड इट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच एनपीवी इज जीरो। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ डिस्काउंट एंड एनपीवी। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीवी भी है एंड रेट ऑफ डिस्काउंट, दैट मीन्स इट इज़ मोर और लेस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट मेथड एंड द सेकेंड मेथड। देन अगेन इसके एडवांटेजेस, राइट। ओके, ये डिफरेंस आपको मिल सकता है एग्जाम्स में, एनपीवी एंड आईआरआर। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआर इज द, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। सो एनपीवी का सबसे पहले तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं दोनों का, एनपीवी और आईआरआर का, राइट। देन सेकंड जो पॉइंट है दैट इज हियर कैश फ्लोज आर कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, क्योंकि एनपीवी एक बहुत ही पुराना, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। एंड आईआरआर यहाँ पे ये अनकन्वेंशनल है, मॉडर्न मेथड है, एंड अ लॉट ऑफ कंपनी आर यूजिंग दिस नाउअडेज। एंड हियर इन एनपीवी cost of capital is considered as the discount rate of at the NPV method, but here in IRR the discount rate is calculated by trial and error method. तो basically ये जो NPV method है it is more reliable than IRR method, and NPV को हम लोग easily calculate कर सकते हैं, but IRR is bit difficult to calculate, complex calculations हैं। okay. एक और शॉर्ट नोट के तरफ चलते हैं, कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन बाय ए कंपनी। तो यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैपिटल रेशनिंग क्या होता है।
एक कंपनी के पास में लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं एंड वहाँ पे वो थोड़ी सी जुडिशियसली यूज़ करती है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड चूज़ करती है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट alternative that is available to it. So like that, you can explain a lot of points on this. The next question, what are the various sources of long term finance? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, राइट? तो बिल्कुल इसको आपको रिवाइज करना है। ये यहाँ पे 6 मेथड्स हैं जो आपके इग्नू के स्टडी मटेरियल में भी हैं एंड आपने पहले पढ़ा भी हुआ है क्लास 11-12 के लेवल में। एंड इसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनी की जो मेन जो सेविंग्स हैं, प्रॉफिट में जो एक पार्ट अक्यूमुलेट करती है एज ए रिजर्व, उसको यूज़ कर सकती है एज ए कैपिटल। देन इक्विटी कैपिटल, ये जानते हैं हम लोग, इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल, जहाँ से कंपनी काफ़ी कैपिटल रेज करती है फॉर द इन्वेस्टमेंट। एंड इसके बाद में लोन ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये भी बहुत पॉपुलर है। एंड उसके बाद में है टर्म लोन्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक से ले सकती है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है। ऑलवेज फ्रेंड्स, डेट कैपिटल इज़ ऑलवेज जो इक्विटी कैपिटल है दैट इज़ ऑलवेज बेटर देन ए डेट कैपिटल, ठीक है। सो एंड लास्टली वेंचर कैपिटल। तो ये जो 6 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, रेजिंग फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करके एग्जाम्स में जाइए। बहुत सिंपल भी है, इनके बारे में हम लोग लिख भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का डिफरेंस। ये आपको शॉर्ट नोट्स में या डिफरेंसेस में मिल सकता है। कैपिटल मार्केट, द मेन पार्टिसिपेंट्स हियर आर कंपनीज, बैंक्स एंड पब्लिक, whereas in money market the main participants or the performers are RBI, commercial banks, and there are no public involved in money market. And in capital market the main instruments traded here are shares, debentures and bonds, whereas here treasury bills, commercial paper, certificate of deposits, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। and here investments are usually in small amounts, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स जो होती है वो लार्ज अमाउंट की होती है इन मनी मार्केट। एंड बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर लोन्स हैं एंड दीज आर शॉर्ट टर्म। तो लाइक दिस मार्केट इज़ रिस्की, लेकिन ये जो मार्केट है मनी मार्केट, इट इज़ सेफ फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, एक और डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत कॉमन टॉपिक है। Primary market is a place where new securities of the companies are bought and sold. Whenever जो कंपनी IPO इशू करती है वो प्राइमरी मार्केट में करती है। एंड ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, जो ऑलरेडी कंपनीज जिसके शेयर्स, बॉन्ड्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, तो वो सेकेंडरी मार्केट में डील करती है। एंड हियर सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड बिटवीन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। इन सेकेंडरी मार्केट securities are exchanged between the investors only. No company is involved in the transactions. And here prices are determined by the management of the companies, and here the prices are determined by the action of demand and supply of the securities in the market. And here only securities are bought and not sold, but here both selling and buying activities are performed in the market. The next question is, explain the different methods of issuing new shares or IPO. IPO के बारे में हम लोग जानते हैं। एंड जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इट कैन इशू न्यू शेयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डायरेक्टली कंपनी सेल कर सकती है इन्वेस्टर्स को। सेकंड जो मेथड है दैट इज़ प्रोफेशनल फर्म्स, बेसिकली जो ब्रोकरिंग फर्म्स हैं उनको उनके साथ में कॉन्टैक्ट करके बेच सकती है। सेकेंडली थर्डली इज सेकेंडरी स्टॉक इशू, यहाँ से कर सकती है। फोर्थली सिक्योरिटीज़ ऑक्शन, दैट मीन्स नीलामी कर सकती है शेयर्स की एमंग द इन्वेस्टर्स। एंड लास्टली ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं तो उनके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर उनको रिक्वेस्ट कर सकती है टू बाय द शेयर्स। तो ये पांचों पॉइंट को आपको डिफाइन करने हैं, राइट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the important functions of a stock exchange and how these stock exchanges are regulated in India?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, कैसे रेगुलेशन होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज हम लोग जानते हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड, एंड इसके जो मेन जो फंक्शंस हैं, जो रोल हैं, इम्पॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो ये इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। जो हमारे पास में जो सेविंग्स होती हैं या फिर जो कंपनीज़ के पास में जो शेयर्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर सकती है लिक्विड कैश में। देन द सेकेंड रोल इज़ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी प्राइसिंग, तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज में होती है। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, it always tries to regulate and to create a safe environment for the investors कि उनकी मनी सेफ हो, and it acts as a economic barometer of a company। कोई भी कंट्री का जो शेयर मार्केट है उस वहाँ से कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मालूम चलता है। एंड लास्टली इट चेक्स ऑन स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़। जो स्पेकुलेशन जो हम लोग करते हैं कि भाई फ्यूचर में राइज होने वाले हैं प्राइसेस या कम होने वाले हैं, तो उसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशंस होते हैं, उनको भी चेक करती है। एंड जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। हाउ, लाइक हु रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। बेसिकली इंडिया में जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दैट इज़ NSE एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इनफैक्ट BSE बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एंड इनको रेगुलेट करती है ये तीन मेन बॉडीज़। फर्स्ट, सेबी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का बहुत ही पुराना, बहुत ही पायनियर इंस्टीट्यूट है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एंड चेक करता है कि द स्टॉक एक्सचेंजेस आर वर्किंग प्रॉपरली, उनको प्रमोट करता है, राइट। द सेकेंड वन इज़ RBI, वी नो अबाउट दिस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अल्टीमेट ये अल्टीमेटली इसी के पास में सारे कंट्रोल्स होते हैं करेंसी को लेके। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी मैंने आपको बताया था दैट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इट हैज़ ओवरटेकन BSE एंड नाउ इट इज़ प्लेइंग द रेगुलेटरी रोल इन इंडिया। ओके, तो इनको वन बाय वन आपको डिफाइन करना है एंड यू हैव टू राइट अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लीज फाइनेंसिंग। Now, what is lease financing? How it is different from hire purchase, and what are the different forms of lease financing? And उसके advantages and disadvantages भी आपको पूछ सकते हैं। Basically, lease के बारे में जानते हैं, और जिनको मालूम नहीं है, we can go from this definition. It is a contract whereby the owner of the asset grants to the other party the exclusive right to use the asset in return for a payment of rent. ठीक है, जब कोई भाड़े में हम लोग एसेट लेते हैं तो जो रेंट पेमेंट करते हैं, एंड जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड लीज। एंड लीजिंग और हायर परचेज, इसका डिफरेंस बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। एंड यहाँ पे लीजिंग में द यूज़र ऑफ द एसेट और लीजी इज़ नॉट द ओनर ऑफ द एसेट, राइट, बट हियर इन हायर परचेज ही इज़ द ओनर ऑफ द एसेट। द लीजी कैन नॉट क्लेम depreciation on asset in leasing, but here in hire purchase depreciation can be claimed by the hirer. In case of leasing, the leasee cannot charge depreciation to profit and loss account while it prepares the accounting for itself. A hirer may charge depreciation to profit and loss account as an expense. And in leasing, the rent paid by leasee is a taxable expense, and in hire purchase the interest paid by the loan is considered as a revenue expenses. So like that you can write the difference between these two, and these are the different forms of lease financing. Like how many types of lease financing can be done? जो सबसे पहले है that is financial lease. फाइनेंशियली हम लोग लीज कर सकते हैं, फाइनेंस लीज दे सकते हैं। देन वी हैव ऑपरेटिंग लीज एंड डायरेक्ट लीजिंग। देन वी हैव सेल एंड लीज बैक एंड लेवरेज्ड लीजिंग। तो ये जो 5 टाइप्स की लीजिंग एक्टिविटीज़ है जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। एंड फाइनेंशियल लीज, ये सारे पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना है वन बाय वन। ओके, अब देखते हैं कुछ बेनिफिट्स लीज फाइनेंसिंग के। जो पहला जो बेनिफिट है दैट इज़ रिस्क ऑफ ओनरशिप इज़ अवॉइडेड। तो अगर आप लीज में कोई एसेट लेते हैं
तो एसेट के जो भी वैल्यू होते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो होता है, तो वो थोड़ा जो रिस्क होता है एसेट को लेके, दैट कैन बी अवॉइडेड. देन कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज यू आर पेइंग एट ए कन्वीनियंट पीरियड, एंड टैक्स एडवांटेज मिल सकता है. एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं लीज फाइनेंसिंग के, दैट इज़ इट इज़ एक्सपेंसिव एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर्स. अगर टाइमली पेमेंट नहीं हो तो जो लीजर है वो कोई भी लीगल एक्शंस ले सकते हैं. एंड द लीजर लॉसेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एसेट, एंड द एसेट में बी ऑब्सोलेंस. अगर आउट ऑफ डेट हो गया या फिर आउट ऑफ फैशन हो गया या फिर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो गया, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. एंड इंडिया में यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, बहुत सारे लीजर हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. एंड लास्टली लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल और ट्रेंड स्टाफ्स हु कैन मैनेज द लीज फाइनेंसिंग. ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर दिस एग्जाम इज व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस. Now, whenever a company undertakes a project, so basically it requires finance, and let's see, like before that, how the company, like what type of requirements or essential factors that it considers before undertaking a project. So these are the basic 4 requirements. The project must be environmentally friendly, and it should have economic value. That means after the completion of the project, it should generate enough returns, cash, and there should be availability of factors of production like raw materials, labor, power, and it should be professionally managed by SPV. So these are, SPV means special purpose vehicle. For example, when Konkan Railway project was undertaken, so it was handed over to special purpose vehicle. Okay, now let's see the difference between corporate finance and project finance. Okay, corporate finance, these are monitored and regulated by the board of directors, and here SPV controls the project financing. And in corporate finance the debt ratio is very low, and here it is very high. In corporate finance a company can raise finance quickly, but here it is a very slow process and involves a lot of transaction expenses. And this corporate finance assumes that the company has a perpetual succession. That means it will last for a longer period of time, whereas project is naturally it expires after its completion. So like this you can define. Okay, let's move on to the next question, which is on Forex. Forex stands for foreign exchange market, and let's see its significance or functions. Now the basic functions that are provided by Forex is transfer of money. We can transfer our domestic currency to foreign markets, and it also provides credit facilities to the investors or lenders. It provides hedging functions. So these are 3 important functions, and its importance can be analyzed here. Like it is a very flexible market where liquidity can be done quickly, very transparency is there, there are very less chances of fraudulent activities, and there is a option of option trading. Okay, the next question, describe the importance of Forex market in India, and also discuss the different types of foreign Forex market that works and regulated in India. So here, as far as importance is concerned, you can write about that in India the transaction cost of foreign markets are relatively less in comparison to the international markets, and there is a elevated leverage. That means you can sell on margins, right? You can easily get better returns, and there is extremely transparency in the transaction, and it is easily accessible by the common people of India. These are the 3 different types of Forex market which are present in India. Firstly, spot market, where on the spot quickly the securities are bought and sold. Future market, like where securities are sold
at a future date, and forward market. So these three types of forex market exist in India, which you can define. Okay. The next is what are the different types of risk which an exporter faces while dealing in foreign currency, and how we can manage these risks. So basically, an exporter or an international trader, it encounters these three types of risk: transaction risk, economic risk, and translation risk. Transaction risk again can be divided into uh, three types, like foreign exchange risk, because foreign exchange rates always keeps on changing. Then there is a commodity risk, and interest rate risk, which is also quite dynamic and changes uh, quite easily. And there is a time risk also, and counterparty risk. So these are all transaction risk. And as far as economic risk are concerned, these three are the different types of economic risk, like sovereign risk, then we have unexpected swing in the exchange rate, and credit risk. So you should learn, because this financial management is not a very easy chapter. Then we have another type of risk, that is translation risk, right? And let's see the different methods and techniques by which this risk can be minimized. Firstly, the company can opt for hedging activities, so that will reduce the risk. Then we have refinancing activities, which can also be undertaken by a company, and due diligence. So these three methods are available to minimize the risk. Okay, let's see the important instruments traded in international financial market. Very important question. So in international market, these are the few important instruments traded, like foreign exchange. We can buy and sell foreign exchange. We can buy and sell these derivative products. We can also have this access to international currency market. Then we can also trade in euro market, euro currency market, and there are some money market instruments which can also be traded in foreign exchange market, like treasury bills. Then we have CP, commercial paper, then euro commercial paper, certificate of deposit, CD, then bankers acceptance, and bond and note issue. So these are all a part of money market instruments. Okay, the next question which you should revise is this one: describe the important theories of capital structure. Very important one. You can also get it in short notes. There are four theories of capital structure. NOI is the first one, net operating income approach. Then we have traditional approach. Then we have net income approach, and Modigliani-Miller approach. All these theories are very, very important. Okay, let me brief you up. The first one, net operating income approach. Now this was proposed by Durant, right? And according to this theory, a firm can increase its value by decreasing the overall cost of capital, which is generally measured in WACC, stands for weighted average cost of capital. And this can be done by raising more debt capital than equity capital. And this is the formula to calculate WACC, that is rate of return into equity plus debt divided by equity plus debt. Do write this formula, and some basic assumptions that you should write here for net operating income approach. Then we have one traditional approach. Now according to this approach, there should be right combination of equity and debt capital in a company's capital structure. And again, you can highlight the assumptions of traditional approach here. The next one is NI approach, that is net income approach. Now again, this was also advocated by Durant, and according to this theory, the market value of a company can be increased by decreasing the cost of capital and increasing the debt of capital. Okay, and again here WACC, this concept plays a very important role, because according to this concept, debt capital is cheaper than equity capital. And again you will highlight the basic assumption. जहाँ जहाँ पे आपको theories हैं, कुछ assumptions उसके लिखने ही होते हैं.
Okay, then we have Modigliani and Miller proposition, very very important one, MM proposition जिसको बोलते हैं हम लोग. एंड इसके दो पार्ट हैं, MM1 MM2. नाउ जो हम लोग देखते हैं नट सेल में दिस अप्रोच ये क्या है, दैट इज नाउ अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस a firm capital structure is irrelevant, and with taxes the firm's cost of capital can be lowered through issuing debts. And as I told you, there are two parts of this theory. The first theory, the first proposition is without taxes and suffered from a lot of limitations. But the second approach, that is MM2, it is with taxes and transaction cost and bankruptcy cost. So this second approach is more popular than the first approach. Now this is MM1. Now here, according to this proposition, the company's capital structure does not impact its value, since the value of a company is calculated as the present value of the future cash flows. And ये जनरली ये चीज़ होती नहीं है इन टुडेज वर्ल्ड, तो इसीलिए इसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं. एंड ये जो है MM proposition 2, दिस इज़ मोर पॉपुलर nowadays. And according to this, the company's cost of capital is directly proportional to company's leverage level, and it assumes that the company pay taxes and transaction costs, and it is widely accepted the cost of debt is less than the cost of equity. That means debt capital is always preferred by a company than issuing equity capital. Okay, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, why do firms pay dividends and what are the factors that are considered before paying the dividend? We know that dividend होता है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदते हैं तो उनको कंपनी डिविडेंड देती है. तो वाई दिस कंपनी पे डिविडेंड्स, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स दे लाइक डिविडेंड्स, उनको पसंद है डिविडेंड लेना. देन इट एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन सिग्नल about the financing strength of the company, and it also acts as a tool for changing the firm's financing mix. It reduces the management discretion, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है. Then it builds confidence among the shareholders. It increases the demand for the stocks of the company. It also increases the market value of shares, and it also assumes that the company has a stable growth, and also increases the market worthiness of the company. तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कंपनी डिविडेंड देना पसंद करती है. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करती है कंपनी बिफोर पेइंग डिविडेंड्स. अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनी के पास में, देन obviously it will try to invest more in those opportunities rather than paying dividends. Then liquidity position, how is the leverage of the company, liquidity position कैसी है, कितना कैश फ्लो है. Then we have debt market conditions, then control considerations and other considerations. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी को ध्यान रखने हैं बिफोर पेइंग डिविडेंड्स एंड हाउ मच डिविडेंड शुड बी पेड. ओके, आगे चलते हैं. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. वी नो दैट मनी मार्केट क्या है, ये आपको मैं समझा चुका हूँ प्रीवियसली. एंड इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मनी मार्केट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर ए कंपनी कैन रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है जिसकी. फर्स्टली TB, दैट इज़ ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंस. तो ये पांचों को आपको एक्सप्लेन करना है. इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं बेटर फॉर द एग्जाम्स. ओके, ये कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किए हैं. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट दैट मीन्स स्टॉक मैनेजमेंट. जो कंपनी के पास में जो स्टॉक है, आइदर रॉ मटेरियल का या फिर कुछ और कोई और भी चीज़ का हो, तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो बेसिकली उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है फॉर ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि कोई भी काम ना रुके ड्यू टू लैक ऑफ
raw materials to avoid overstocking and understocking of the inventory, and to maintain a minimum level of working capital, to reduce the different types of cost like holding cost, transportation cost and order cost. ये बहुत important है, to reduce the wastages and to help maintain a systematic record of the inventories. So these are few main objectives, and ये है सबसे important चीज़, inventory management techniques. शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन 4 आपको डिफाइन करने हैं, लिखने हैं, लर्न करने हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, रीऑर्डर लेवल, then ABC and just in time inventory control. So these are the 4 techniques by which a company can maintain its inventories. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखते हैं, ब्रीफ कर देता हूँ आपको। It is that quantity where the total cost of inventory management is minimum, and according to this technique, the order quantity should be such that the firm has economy of order cost, and the number of order cost should be less, क्योंकि जितने ऑर्डर कॉस्ट होंगे उतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी के कॉस्ट बढ़ेंगे। तो कम से कम ऑर्डर कॉस्ट, एंड ये फॉर्मूला है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट EOQ, राइट। एंड इस मॉडल के एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज़ रीऑर्डर लेवल, एंड हियर द रीऑर्डर लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मतलब एवरेज स्टॉक लेवल जो एक कंपनी को रखना है अपने पास में। एंड इसके भी एक फार्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल लीड टाइम इनटू नॉर्मल लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स कंजप्शन पर यूनिट टाइम। इसको और आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं दिस वन, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट टेक्निक ABC टेक्निक, जहाँ पे स्टॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। कैटेगरी A में यहाँ पे लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू के स्टॉक्स होते हैं, एक्सपेंसिव स्टॉक्स होते हैं, उनकी वॉल्यूम कम होती है। कैटेगरी B जो है मॉडरेट वॉल्यूम मॉडरेट वैल्यू, एंड कैटेगरी C हाई वॉल्यूम बट लो वैल्यू, दैट मीन्स इनएक्सपेंसिव, जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं लाइक स्टेशनरीज। यहाँ पे मैंने टेबल में शो किया है, एंड ये तीनों टाइप के स्टॉक कंपनी को मेंटेन करने होते हैं। एंड कैटेगरी E में एक्सपेंसिव स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे मॉडरेट वैल्यू के, एंड यहाँ पे जो एकदम सस्ते होते हैं। जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ JIT, जस्ट इन टाइम, and here goods are ordered when they are needed only, right? And the main object is to control the stock of goods, to reduce the wastages of stocks, and it helps the producer to concentrate more on production rather than handling the stocks, and it also helps the producer to produce good quality of products। मतलब जैसे जैसे आपको ज़रूरत है वैसे वैसे आपको ऑर्डर करके रॉ मटेरियल्स को आपको मंगवाने हैं, बाय करने हैं। एंड ये जो चीज़ें ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, दिस टेक्निक इज़ वेरी पॉपुलर अमंग दोज कंपनीज। ओके, देन वी हैव वन मोर दैट इज़ अ शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की। इट इज़ द एडिशनल इन्वेंट्री हेल्ड बाय द कंपनी टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई। अचानक से अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो यू नीड स्टॉक, तो इसके लिए एक सेफ्टी स्टॉक लेवल कंपनी तैयार करती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पार्ट 1 वीडियो MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, एंड इसके जो पार्ट 2 वीडियोज़ हैं दैट विल बी अपलोडेड सून, एंड बिफोर दैट काइंडली रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चंस एंड ऑल्सो डू द सेल्फ प्रिपरेशन। So best of luck for the exams.